Hello, good evening everyone. Very good evening. Hi Saurabh, nice to see you too. Hi Kalavati, hello. Hi Amrita, good evening. Hi Janina, very good evening. Good evening Ankit, good evening Susmita. Very good evening guys. I hope I am clearly audible and visible to all of you. Is that right? Is everything okay? Hi Tanu Singh, good evening. Hi Debarti. अनुभव कह रहे कैसे हो आप? आज ही तो मिले थे दोपहर को अनुभव. हाय मिलन शर्मा, हेलो गुड इवनिंग. हाय सौरभ, सुष्मिता एंड एवरीवन. सोनी. Am I audible now to each one of you? Just confirm once. Is everything okay? There was some technical issue in between. I saw एकदम से चला गया था सब कुछ. Is it back? Everything okay? Yes, now okay. Hi Aniket. Hi Nigam Yadav. Hi Rakshana, Chitransh, Milan, Janina. Yes, it's okay now. Amrita, that's a question of P and C. Okay, but you send it to me on WhatsApp. I'll reply there. So here, because we are discussing linear equations, so it will be slightly off track. So let's not do it today. आप मुझे message कर दीजिएगा. I'll be talking. I'll be replying to that. ठीक है. Now it is everything okay, right? तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव बीन टेलिंग यू इन द फ्रॉम द लास्ट क्लास एज वेल दैट गाइस दिस इज व्हाट वी आर डूइंग करंटली फॉर MACT एग्जाम एंड फॉर द अदर MBA एग्जाम्स आल्सो. सो वी आर हैविंग दिस ऑफ गोइंग ऑन नाउ व्हिच इज 45% ऑफ and you have to use this code for that, probably something related to cricket because it is an IPL season. So because of that you are getting this discount. And other thing is that we are having this MACT exam. Of course the last exam of this season, so therefore we are having this course of MACT. It's a 3-month rank booster course. So any one of you who is appearing for MACT, I think this would be a good chance for them to improve their scores. Okay. So let us start. So yesterday's class we talked about that how linear equations are formed. We also talked about slope and I told you that slope is the most important part for us. ठीक. So today I am just extending that. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, स्लोप वगैरह के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे क्या कुछ होता है. इफ यू रिमेंबर दिस करेक्टली, तो कल हम लोगों ने बात की थी फॉर एनी लाइन ऑफ द टाइप ax plus by is equal to c, the slope is given by minus a by b. If you remember this, है ना? Sorry, minus b by, मैंने उल्टा बोल दिया, minus b by. ओके नहीं, माइनस ए बाई बी तो ठीक है यार. क्या हो गया है, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया. सो ए उधर जाएगा, डिवाइड होगा, माइनस ए बाई बी तो था. इट वॉज करेक्ट. सो द स्लोप इज गिवन बाय माइनस ए बाई बी, राइट? फॉर ए लाइन इट इज माइनस ए बाई बी. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल कि यार बहुत बार जो है ना स्लोप हम लोग काफी बार यूज करेंगे. दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो काफी बार इसकी जो है यूसेज आती रहेगी इन वन और द अदर क्वेश्चंस. We talked about this line as well, which is 2x plus 3y is equal to 60. We talked about this graph which I have made for this line 2x plus 3y is equal to 60. I talked about slope and now we are moving ahead from that. So the angle formed by this line with the positive direction of x-axis, this angle formed by this line with the positive direction of x-axis, let us call this angle as theta. So I told you that the slope of this line would be equal to that tan theta, that is also equal to minus a by b, or you can call it minus 2 by 3. We discussed it कि minus 2 by 3 का मतलब ये है for every change of 3 in the value of x, there is a change of minus 2 in the value of y. Remember this? हमने यहाँ इस पॉइंट से उस पॉइंट तक के हिसाब से इसको डिस्कस भी किया था कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं. तो वही सब चीजों के बारे में मैं आज भी बात कर रहा हूं. ठीक है जी. अब आते हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं. ठीक. दिस वॉज अबाउट स्लोप. सो नाउ सपोज आई मेक अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. आई मेक अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. So if I make a line parallel to it, so can I say in this case also, using that parallel lines वाला concept आपने पढ़ा होगा, there are two parallel lines, a transversal is passing through that. In those cases what do we do? If this angle is theta, actually this angle would also be equal to theta.
ठीक है. Yes, Nigam Yadav, but I would not say that more of coordinate geometry, but yes, slightly through the graphs. Of course, whenever we talk about coordinate geometry, it is all about graphs. तो graphs के through basically we'll be able to understand कि क्या कहना चाह रहा है हम लोगों को. So if this line is making an angle of theta, so this line would also be making an angle of theta. And if the slope of this line is equal to tan theta, so of course the slope of this line would also be equal to tan theta. Both the lines will have a slope of tan theta over here. दोनों का ही slope tan theta हो जाएगा. And on the basis of that only we always say that in case of parallel lines, their slopes are equal. In case of parallel lines, their slopes are equal. So that is the major reason why do we say this, that why parallel lines have the same slope. Because slope के बारे में हम बात कर रहे थे. Slope is the basically about the angle formed by the line with the x-axis. तो अगर दो लाइन सेम एंगल बना रही होंगी तो उनका स्लोप भी सेम हो जाएगा. सो द इंक्लिनेशन हियर वुड आल्सो बी द सेम. सो लेट अस से दिस लाइन हैड अ पॉइंट 0,20 हियर एंड 30,0 हियर. यू रिमेंबर दिस? ये हमने कल डिस्कस किया था that if x changes by 30, y changes by -20 and the slope is -2/3. Similarly, let us say this line passes through 0,9. This line passes through 0,9. And on this point, I know that y is equal to 0. Can you tell me what is the value of x over here? तो ये किस point पे x से pass कर रहा होगा? So this is going to tell me, because the slope of that line was -2/3. So slope of this line would also be -2/3. I see that my y has changed by -9. उस केस में क्या हो रहा था? y was changing by -20, so x was changing by +30. This time I see my y has changed by -9. If y has changed by -9, how much would my x change? राइट? तो इसको मैं लादर 9 की बजाय थोड़ा सा एक आसान नंबर ले लेता हूं, आपको भी ठीक लगेगा. दैट इज 10. सो इफ दिस पॉइंट वाज 0,10, आई कैन स्ट्रेट अवे से दैट दिस पॉइंट मस्ट बी 15,0 फ्रॉम विच द लाइन पासेस. ठीक है? सो there might be some problem today in the video because there have been a problem since morning about internet. So all the classes that I am taking today, उनमें कुछ ना कुछ issue आ ही रहा है. ठीक है? About buffering and all. So you might have to adjust for a day for these things. Completely out of my hands. Of course, I cannot do anything. So this is what I am talking about. When the lines are parallel, what happens? The slopes are same. Slope same हो जाएंगे तो जितना वहां रिडक्शन आ रहा होगा exactly उतना ही रिडक्शन यहां पर भी आ रहा होगा. This is what it is telling us. ठीक है? Let us talk about the second scenario now. The second scenario is when I have a line like this. So you see a line. This line is actually perpendicular to this previous line. This line is perpendicular to this previous line. Okay, Disha is asking a question कि 15 आया कैसे? Okay guys, many of you are asking. I am saying अगर ये -20 से -10 हुआ है, this is -20 से -10, so इसका मतलब हाफ हुआ है ना, तो यहां पर भी ये 30 से हाफ हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो रेशो इनका आता है वही रेशो एग्जैक्टली उनका भी आना चाहिए. एग्जैक्टली. ठीक है? बिकॉज देयर स्लोप्स आर द सेम. Aniket, minus sign is just signifying that one of them is decreasing, other of them is increasing, and therefore you see that the line is going downwards. So when a line would be going downwards, so basically height wise it is going down, right? But if you look at the distance horizontally, it is covering more distance horizontally. तो horizontally ज़्यादा cover कर रही है, that means on x axis it is going up. X is increasing, but it is going downwards. इसका मतलब value of y is decreasing because height कम होती चली जा रही है. This is telling you about one of them increases, the other of them is decreasing. Okay? So here now I talk about the other line. In this other line I am saying कि ये जो line हमारी यहाँ पे बनी हुई है, this line is let us say perpendicular to that previous line. ये उसके perpendicular है. ठीक है? अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो कहना है इससे ये जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल वुड एक्चुअली बी इक्वल टू थीटा -90, बिकॉज इफ इट इज परपेंडिकुलर तो ये पूरा एंगल तो वैसे ही थीटा था ना. दिस कंप्लीट एंगल वाज इक्वल टू थीटा.
तो अगर पूरा का पूरा एंगल थीटा के बराबर है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90, सो दिस रिमेनिंग एंगल कैन आई से दैट वुड बी इक्वल टू थीटा माइनस 90, राइट? And if that angle is equal to theta minus 90, what is the slope of this line? The slope of this line would be equal to tangent of theta minus 90. Are you getting this? निगम यादव, y2 minus y1 upon x2 minus x1 ही यूज करते हैं. Yes निगम, that is exactly what it is. उसी के बारे में हम लोग यहां बात कर रहे हैं. Can we purchase separate quant course for CAT on Gradeup? Simon, I think we don't have any separate quant course currently. But still you can talk to the number which is given over here. They'll give you an idea about it. पूरा थीटा कैसे हुआ मिलन? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये पूरा भी तो थीटा ही है ना. दैट इज वन और द सेम थिंग. अगर मैं कहीं पे एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं कहता हूं ये एंगल इज थीटा, सो व्हाट वुड बी दिस एंगल? दिस इज ऑल्सो थीटा. ये तो आप कहीं से भी ड्रॉ कर लो, दे ऑल आर इक्वल टू थीटा. तो वो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये थीटा है तो पूरा भी थीटा कैसे है, बट एक्चुअली दिस एंड दिस आर द सेम थिंग. जिसमें से उधर वाला एंगल इज 90 which I have removed, so the other angle would be equal to theta minus 90, and theta minus 90 is actually equal to minus cot theta, or you can also write it as minus 1 upon tan theta or 1 upon minus tan theta. So from there you can say a line has a slope of tan theta. A line had a slope of tan theta, that is m or minus 2 by 3. The line which is perpendicular to it, it will have a slope of minus 1 by tan theta, and by that logic you can say that when the lines are perpendicular, by that logic I can say in case of perpendicular lines what is going to happen. जब भी perpendicular lines होंगी, in that case one slope is actually negative reciprocal of the other slope, or you can also say their product is equal to minus 1. ये आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा कि if the lines are parallel, the slopes are equal. If the lines are perpendicular, the slopes are negative reciprocal of each other, or you can say one of the slopes is a उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर वन. सो इफ वन इज m1, द अदर वन वुड बी इक्वल टू minus 1 by m2, और यू कैन से इफ वन इज m2, द अदर वन वुड बी इक्वल टू minus 1 by m1. दिस हैपेंस इन केस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस. यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो जरा मुझे एक बार बताइए. एंड इज द वीडियो फाइन? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसमें? बिकॉज वी हैव प्रॉब्लम्स टुडे, सो आई विल हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन. इज इट क्लियर गाइस? सब कुछ क्लियर है यहां पे? समझ आ रही है बात? ठीक है जी, सब कुछ क्लियर है तो फिर हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. लेट अस जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस. इसको पूरे को मैं रिमूव कर दे रहा हूं. हाँ जी, सो आई एम सेइंग दैट दिस इज एन इक्वेशन विच इज इक्वल टू 2x plus 3y is equal to 60. We discussed about this yesterday as well, that whenever we have an equation in two variables, तो टू वेरिएबल्स के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्जेक्टली व्हाट डू वी हैव? दैट वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बिकॉज देयर इज अ लाइन व्हिच गोज अप टू प्लस इंफिनिटी and it goes up to minus infinity as well. So one single equation 2x plus 3y is equal to 60 cannot have a unique solution, because it will going be up from plus infinity to minus infinity. When can I have a solution? Of course I can have a solution only if I have another line. Okay, so now if I have one line as 2x plus 3y is equal to 60, and I write another line, let's say the another line is 4x plus 6y is equal to 60. One line is 2x plus 3y is equal to 60, and I write the other line as 4x plus 6y is equal to 60. तो अब तो एक लाइन का मेरे को ये मिला हुआ है ग्राफ, दूसरे का भी ग्राफ मिल जाएगा. They will intersect at a point and we will have a solution. But actually that will not happen in this case. The reason is, if you look at the first line, what is the slope of this line? The slope of this line is minus a by b, that is minus 2 by 3. What is the slope of this line? Minus 4 by 6, which is also equal to minus 2 by 3. So that means these two lines are having the same slope. And same slope का मतलब है they are parallel lines. And how do I get to know? The coefficients of x
if their ratio is equal to the coefficients of y, इसका मतलब ये है दोनों के स्लोप सेम है, और स्लोप सेम होने का मतलब the lines are parallel. Hi Vaibhav, hello. So if the coefficients of x and coefficients of y, they are in the same ratio, in that case I can say that the lines are parallel. And this ratio I see is not equal to the ratio of the constant terms. इनके रेशियो के बराबर नहीं है. यहां से आ गया लाइंस पैरेलल हैं, ये रेशियो के बराबर नहीं है. ये चीज होती क्या है बाय द वे? इफ यू रिमेंबर, y is equal to mx plus c. What is this c? We used to call it a constant, but actually it is the y-intercept. It is the point where the line cuts the y-axis. तो अगर यहां पे लाइन कट कर रही है तो इस लाइन का ये जो पॉइंट पे y होगा, that would be represented by c. So इसका c और इसका c दोनों का सेम तो है, लेकिन ये 2 से डिवाइड करने के बाद तो सेम नहीं रहेगा. This ratio and this ratio, whatever ratio are these two, they are not equal to this third ratio. That means this is representing two parallel lines, but they are passing through two different points, and hence we can say no solution would be there. Actually the scenario would be like this. There is one line, there is another line parallel to this, और ये जो लाइन इसके पैरेलल है ये कहीं और से पास कर रही है इसके मुकाबले. सो इन सच ए केस देयर इज नो सॉल्यूशन. दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, दैट इवन आफ्टर हैविंग टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वी डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन. दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं आया. रिपीट कर देता हूं, करना क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ x का रेशियो देखिए, कोफिशिएंट्स ऑफ y का रेशियो देखिए. इफ दे आर इक्वल इट प्रूव्स द लाइंस आर पैरेलल. बट इफ दैट रेशियो इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, इसका मतलब पैरेलल लाइंस तो है लेकिन अलग अलग जगह से पास कर रही हैं. सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉल्यूशन इन दिस केस. दैट वाज द फर्स्ट सिनेरियो. लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड सिनेरियो. On the second scenario, let us say we have an equation like this: 2x plus 3y is equal to 60, and another equation 4x plus 6y is equal to 120. This time again I see the ratio of the coefficients of x, it is equal to the ratio of the coefficients of y, and that ratio is also equal to the ratio of constant terms, right? यहां अगर 60 के बजाय कोई और नंबर है तो फर्क नहीं पड़ता हरिनी. इन एनी केस अगर ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है, नो सॉल्यूशन. बट नाउ इफ आई राइट 120, आई सी this ratio is equal to this ratio which is also equal to the third ratio. अब अगर तीनों ही रेशियो बराबर है, इसका मतलब तो ये हुआ that those two lines are actually the same. There is no difference. पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है. They are coincident. And if two lines are coincident, where would they intersect? They would intersect at infinite points, and hence you will have infinite solutions. In such a case you will have infinite solutions. I hope this is clear. यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है. इसमें कोइंसिडेंट लाइंस हो गई हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, एंड हेंस दे आर नेवर गोइंग टू हैव अ सॉल्यूशन. ये एक ही लाइन है एक्चुअली, वैसे भी दिख जाएगा. यू डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2x plus 3y is equal to 60. So I have just written another line by multiplying the first one by 2. So how can they give us a solution? Third scenario now. In the third scenario, I say I have one line as 2x plus 3y is equal to 60. Let us say another line is 6x minus 4y is equal to, let's say, 90. What is the case here? The coefficients of x, they are in a ratio of 2 by 6. The coefficients of y, they are in a ratio of 3 by minus 4, and they are not equal. The first two are not equal. If first two are not equal, that means the slopes are not equal. And if the slopes are not equal, that means they are not parallel. And if they are not parallel, they are definitely going to intersect at only one point, and hence you will have a unique solution. So in such cases जब lines parallel नहीं होती तो of course एक ही तो solution आता है. Solution means the point which satisfies this line as well as that line.
तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा. सो दीज आर द 3 केसेस इन विच द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस कैन बी देयर. These are the 3 cases in which the number of solutions can be there. I hope you are getting this all. No doubt about it. This first case, first 2 ratios equal, not equal to third. That means parallel lines passing through different points, no solution. Second case, first 2 ratios are equal and also equal to third. That means same lines, infinite solutions. Third case, first 2 ratios not equal, that means not parallel, unique solution irrespective of the values of C. वो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को. यहां वाला रेशो चाहे कुछ भी हो जाए, फर्स्ट 2 का रेशो अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है irrespective of the value of the constant. Got it निगम? यही मैं बता रहा था इसी केस में. All cases clear? And once I have this case, अब मुझे पता है यूनिक सॉल्यूशन आएगा. अब अगला सवाल ये है कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा. दैट मींस हाउ डू वी सॉल्व दीज इक्वेशंस. अब अगला पॉइंट ये आता है. तो सॉल्व करने के मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता होंगे दैट देयर आर वेरियस वेज ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस एंड द मोस्ट पॉपुलर वे आउट ऑफ दोज वेरियस वेज इज आई थिंक एलिमिनेशन मेथड. सबसे ज्यादा हम लोग इन एलिमिनेशन बोलते हैं, है ना. इनफाइनाइट मीन्स विशाल मतलब विच कैन नॉट बी काउंटेड. 2 पॉइंट्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो इतने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते. दैट इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट केस में 4x + 6y = 120. डज दैट मीन इट्स y इंटरसेप्ट इज 0 and 120? नहीं. y इंटरसेप्ट अनुभव तब मिलेगा व्हेन यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c. तो y = mx + c लिखोगे तो एक्चुअली 6 से दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली 20 बन जाएगा इंटरसेप्ट, 120 नहीं रहेगा. हाँ जी. सो सॉल्व करने का मतलब द मोस्ट पॉपुलर तरीका कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस बिकम्स 3 2 6x + 3 3 9y = 180. और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज रख दिया. 6x - 4y = 90. और फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दिया एंड वी गेट 13y = 90. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट सम वैल्यू ऑफ y, राइट. और फिर y की वैल्यू को हम में से किसी भी एक में पुट करके वी गेट द वैल्यू ऑफ x. दैट इज वन ऑफ द वेज. एक तरीका तो हुआ ये. यस दैट्स राइट विशाल, विच इज नॉट काउंटेबल. जिसको आप नहीं काउंट कर सकते वो इनफाइनाइट. सो द अदर मेथड वाज आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड. इफ यू रिमेंबर दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, 2x कितना बन जाएगा मेरा, इट इज इक्वल टू 60 - 3y. सो x = 60 - 3y/2. और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं. सो 6 × 60 - 3y/2 - 4y = 90. इसको सॉल्व करके y निकाल दोगे, पुट करके x निकाल दोगे. बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली स्कूल टाइम में दे यूज्ड टू आस्क अस दिस क्वेश्चन कि नहीं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके दिखाओ, वैसे सॉल्व करके दिखाओ. दे कांट आस्क दिस टू यू नाउ. अब नहीं कह सकते कि नहीं एलिमिनेशन मेथड से करो, नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, बिकॉज दीज आर नॉट सब्जेक्टिव पेपर्स. जो मेरा मन करेगा, जो मुझे आसान लगेगा वो मैं करूंगा. उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है. देयर यूज्ड टू बी अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एज वेल, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, जो मुझे तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है. कुछ होता था ना ऐसा, कुछ x डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, y डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ऐसा कुछ करके करते थे. सो दैट इज यूजलेस. ठीक है. एंड द फोर्थ वन वाज थ्रू ग्राफ्स एज वेल. 4 तरीके बताया करते थे हम लोगों को. फोर्थ वाज कि दोनों का ग्राफ बना और उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ. तो स्कूल में सारे काम किए हैं हम लोगों ने, राइट. सो दैट इज ऑल गाइस. ये था सबसे पहला पार्ट लीनियर इक्वेशंस का. दो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस इन लीनियर इक्वेशंस बेस्ड अपॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस. जैसे होते हैं ना, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर. आवर नेक्स्ट क्लास वुड बी बेस्ड अपॉन दैट. पॉजिटिव इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव, वो सब के बारे में. Currently I am going to talk about a set which appeared in CAT many years back. So I am just going to talk about this graph once. I will show you the questions. You will try them by yourself and then we'll talk about these questions in our next class as well.
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। और आज फिलहाल जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं ये कैट का एक्चुअल सेट है, डीआई में आया था, इस पे 4-5 क्वेश्चंस थे। सो हाउ इज लीनियर इक्वेशंस हेल्पफुल इन दिस केस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। लुक एट दिस, घोष बाबू हैज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. He says the following graph gives the cost for various number of units. Given is profit is equal to revenue minus variable cost minus fixed cost. The fixed cost remains constant up to 34 units, after which additional investment is to be done in fixed assets. In any case, production cannot exceed 50 units. Production 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती. So ये क्या बता रहा है इस केस में? He is telling you about revenue minus variable cost minus fixed cost is profit. This is the line of revenue. This is the line of variable cost. This is the fixed cost जो 34 यूनिट्स तक सेम रहती है. एंड आफ्टर दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस एंड बिकम्स समथिंग एल्स. उसके बाद बढ़ के कुछ और हो गई. यही बात कर रहा है ना, यही सब बताया उसने. अब नाउ लेट अस से इफ आई आस्क यू ऑन हाउ मेनी यूनिट्स ही विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज. On how many units he will have a profit of 30. आप देखेंगे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट. 30 का गैप, ये रेवेन्यू है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस करना है ये वाला भी. तो 30 का गैप कब आएगा? इट विल बी एट 24 और 23 और 22. Isn't it very difficult to figure out that ways? अगर मैं ग्राफ देख के इसको आंसर करना चाहूं तो what is the best way of doing this question? First of all, let us talk about the variable cost. I am talking about the variable cost. The variable cost is 0, right? When the number of units is 0, and it is going in a straight line, so that is following a linear equation, and on 50 units it has become equal to how much? It has become equal to 700. For x is equal to 0 it is 0, and for x is equal to 50 is equal to 700. So can I say कि ये 50,700 टाइप का फिगर हो गया है, ये 0,0 टाइप का 2 पॉइंट हो गया है. आई कैन मेक एन इक्वेशन, बट वो इक्वेशन तो हमारी हो जाएगी अल्टीमेटली ऐसे केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड, वो तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है. बट कैन आई से कोई चीज 0 थी, धीरे 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 बढ़ती रही, 50 पे आके 700 हो गई. आई कैन यूज स्लोप. रिमेंबर दैट स्लोप. 0 से कितना इंक्रीज हुआ x में? 50 का. और y में कितना इंक्रीज हुआ? 0 से 700 का. पर यूनिट चेंज कितना हुआ? 700 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 14. which is equal to 14, and therefore I can say that my variable cost is actually following a pattern of 14x. ये हर बार 14 14 14 14 से बढ़ रही होगी, इसीलिए यहां तक पहुंच गई है ये. ठीक है, 0 पे 0 थी, 1 पे 14 रही होगी, 2 पे 28 रही होगी, 3 पे 42 रही होगी, so on and so forth. It is going up to that. फिर बात आती है फिक्स्ड कॉस्ट की. फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, ये तो 70 पे फिक्स्ड है ऐसे. फिर बात आती है रेवेन्यू की. नाउ कैन आई से रेवेन्यू जो है मेरा वो 50 पे आके इट हैज बिकम हाउ मच? 1000. 50 पे 1000. इट्स ए लीनियर इक्वेशन अगेन. आई एम अज्यूमिंग एक्स हैज द नंबर ऑफ यूनिट्स जनीना. ठीक है, एक्स को नंबर ऑफ यूनिट्स मान रहा हूं मैं. ओके, सोनी कैसे कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू 50 है, वाई की वैल्यू 700 है ना, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. सो एक्स मस्ट बी 50, वाई मस्ट बी 700. इन दिस केस इट इज 1000 एट 50. कितने से बढ़ रहा है? 20 से. सो आई कैन से रेवेन्यू इज 20x. सो अगर मैं प्रॉफिट को देखूं, एक्चुअली प्रॉफिट इज शोइंग यू अ लीनियर इक्वेशन. कैसे? रेवेन्यू विच इज 20x माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इज 14x minus fixed cost which is equal to 70. So it is 6x minus 70. प्रॉफिट की तो इसका मतलब एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई. इट इज 6x minus 70. नाउ द क्वेश्चंस वुड बी इजी फॉर यू. अब वो आपसे पूछेगा अच्छा ये बताओ व्हेन वुड द प्रॉफिट बी 30? आई वुड से पुट इट इक्वल टू 30. 6x minus 70 is 30. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 100 by 6. तो 16.66 यूनिट्स पे यू विल हैव ए प्रॉफिट ऑफ 30.
when would the profit be is equal to this, when would you achieve this, when would you do that, वो सारी चीजें हम लोगों को अब यहां से मिल जाने वाली हैं. मिलन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये 70 यहां दिख रहा है ना, देखो ये फिगर दिया हुआ है, दिस इज 70. But keeping in mind that x is only up to 34, because the moment the figure or number of units becomes 34, वो कह रहा है तब ये 100 हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब उसके बाद it would be 6x minus 100. When x is above 34, it is 6x minus 100. When x is below 34, it is 6x minus 70. According to that, you have to answer these questions. So I'm giving you time to do this. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे आप लोग ये क्वेश्चंस करके आइएगा और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस टुमारो. नाउ आई एम डे आफ्टर टुमारो, देयर इज नो सेशन टुमारो, थर्सडे को नहीं होता है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसका आंसर गलत है, मुझे याद है शायद एग्जाम में भी गलत था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये इनडिटर्मिनेबल को काट दो, ये आंसर नहीं है. लेट्स कीप इट नन ऑफ दीज. ठीक है, एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट इट. जो भी आपका है वो जरा मुझे बताना. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड सच दैट द प्रॉफिट वाज एटलीस्ट 50. थर्ड क्वेश्चन, if at most 40 units can be manufactured, what is the number of units that can be manufactured to maximize profit per unit? You have to figure it out कि ये कैसे आएगा. फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा फोर्थ नहीं दिया मैंने, 3 ही दिए, वैसे 4 थे इस पे. 40 के बाद एक शायद 45 था फिफ्थ वाले में. सो दीज वर दी क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड अपॉन दीज. प्लीज डू दीज क्वेश्चंस एंड इन द नेक्स्ट सेशन we'll first discuss these questions and after that we'll move forward to क्या बोल रहा था मैं, integral solutions of linear equations. ठीक है, आज के लिए इतना ही है guys. Thank you very much. And now something about this course, Core 99 Plus. We have been doing this course now for the last few days. So this is a course for CAT aspirants, for 2021 aspirants, right? So anyone who is trying to get an admission into this, so first of all let me tell you what all is covered under this. क्या कुछ आएगा इसमें. So it will be catering to not only CAT but the other exams as well. There will be a lot of revision classes, day-wise plan, and live classes and quizzes. That everything is a part of it. Also, you will be having 250 plus interactive classes and green card. जो हमारा green card होता है, according to the green card actually you will be getting 60 plus mocks and sectional tests, 10,000 plus practice questions. So basically everything which is written on the screen, and it's a comprehensive course, so it includes everything guys. Okay. And for CAT 2022 as well, we have started a batch. Recently we have started it. So CAT 2022 complete course would be there. Again, it will be included everything which is there in Score 99 Plus batch. Of course, it will be slightly having more sessions because CAT 2022 is a bit away. तो ये इस पे है. And these are the current prices for Gradeup super subscription, guys. I hope many of you would be knowing about super subscription, under which basically you can join any course of MBA entrance examination during that time, and they are for these durations currently at these prices which are written over here. Okay, using this code you can get some extra discount, and as I told you, you'll be getting complete access for all the courses. This is what it is all about guys. Thank you very much, and please like the session, comment on it, share it with the people whoever is appearing for these exams, and subscribe to the channel so that you keep on getting all notifications. Tomorrow there is no channel, there is no session. Day after tomorrow we'll have the next session on linear equations, and most probably will be able to complete it that day. Okay, thank you very much guys. Good night, bye bye.